Hi guys, what's up? How are you? Hi, I passed my first account finally last week. Wow, that's amazing, Yuvansh. Perfect. See how quickly you passed your account since then. I hope that you do well in your funded account as well. Hey, hi, crypto world, how are you? Let's see, you see, I don't know why I'm just trying to do my video on, but I don't know what's up with OBS. These days, OBS is just glitching out. I don't know what's up. I'm good. How's you? I hope you are doing well. Yeah, I'm doing well. How are you? Let's see, University. What's up? I'm happy that you guys are doing really good with the prop firms, and I'm happy that you're taking very good trades in the Discord as well. I'm watching it out like crazy trades you're pasting. Okay, so basically my bias is bullish for the Euro USD, and let's see if this fair value gap is formed. I'm gonna enter on this fair value gap. It's just 58 seconds left, so if we can get some kind of position right over here, then let's see. Haha, that true that the advice worked very well. I'm glad that you actually listened to the advice. I'm really glad about that. There are very few people who actually listen to things and they apply. But I'm very, very happy for you. This will help you in building your confidence as well now, since you've passed your account. So I'm gonna take my trade over here. I'll place my buy limit right over here and just 20 pips of the TP. Hi, Miss Side Trader. What is Side Trader? Okay, so I've placed my buy limit right over here. So if it taps on this area, I'm gonna enter on this trade. Gold US is just bursting up these days since the market is open. If anybody knows how to use OBS, do let me know. I don't know what's happening with my OBS, it's just glitching out.
Let's see. It should not go without giving us the entry. Let me write on there, not activated. Let's see on the daily time frame what's up with euro today. So on the daily time frame, it's the candle already flipped. Though this is not my E plus setup, but still, the 4 hour is as well flipped and by forming the fair value gap. The 1 hour had a breakout above, and the only thing is that this imbalance right over here is the only concern right now that I have. 21 pips almost. Euro is up, yeah. Euro is bullish for now. So this is the imbalance on the daily time frame plus one liquidity that is lying right over here. This one, Asia low liquidity. So that is the only concern that I have right now, that we have not taken the Asia lows liquidity and we just moving up, and let's see the closing of 1 hour. So if we have a good closing of 1 hour and 39 minutes, this kind of bullish closing above the range, then we are good to go, pretty much. The only concern is that if it wants to retrace down, then fair value applies here. That is near our stop loss. So, anyways, doesn't matter. How your guys' weekend was? Did you trade something, or you what did you guys do? What is the biggest life lesson trading teaches you? Biggest life lesson, I must say that
The first thing trading teaches you is this, that effort does not guarantee results. Like, it doesn't matter how much effort you're putting inside the trading, it's not guaranteed like that you will succeed in it. So I feel that is one of the life lesson, I would say, that you can follow your rules, you can have a perfect setup and still can take a loss. So this is one of the things that I feel about trading. This is really uncomfortable, but I feel in life also it's very true. Because many people get frustrated because they believe that effort should always be rewarded immediately, and but trading forces you to accept the results that are probabilistic. So once stop trying yourself to outcomes, you start making better decisions, I feel. So it doesn't guarantee success at all. So I feel this is one of the biggest life lessons that you can learn through trading. Exactly, and very true said. Yeah, I mean, that's a fact. It's really hard to believe for the people, but it's the fact that needs to be accepted sometimes. And a lot of mentors guarantee success here. Yeah, I mean, again, that's the thing that I would say, that's the life lesson that trading teaches you in itself. Like, if you learn by yourself, then you gotta know that this is not very true, that you will 100% succeed in this. That's why there's like a very small amount of people that are still, in the game. So I just openly say that I don't think so trading is for everyone, but if you have that kind of learning attitude and can change yourself very quickly according to the situations, then again you can do wonders in trading, because your learning curve will be so huge. Because if you will not have learning attitude, or you will have the ego or something. So without giving us the end, it's moving up. That's not fair.
it will hurt if it doesn't tap on our entry and give us the move that we want. Can you explain euro right now? Of course. So, I'll share you the basically I shared the logic behind my trade, but again I'm gonna share you the logic behind the trade. So, if you see on the daily time frame, अगर हम यहाँ पे देखते हैं on the daily time frame, flipped the candle already flipped and it seems super bullish, right? And we failed to take the low of the previous daily candle, and we are going up to hunt the liquidity that is upside, right? So if you see that we are having the rejection right now, why? Because if you see on this area we have a small fair value gap and we are constantly having a rejection from this area right now, right? So we managed to fill this above and close have a closure above this area, then again we're gonna see a little bit of bullish move. But for now that's the case. And if you see even on the 1 hour time frame, so according to our setup we have a good break above this candle high that was of 11:30 candle, right, forming the bullish fair value up on the 5 minutes time frame. Yeah, so one of the confluence that is not in our favor is that we have a lot of imbalance down right over here first, and might be that we come down to a retrace, and we have a small fair value up right over here where our stop loss is. So that is one of the confluence that is not in our favor. But again, we have a good setup. So according to the market structure, so we took this trade. Again, it already gave the half move, so let's see. 20 pips is as usual. Our TPs always remain 20 pips because that's the average movement that Euro USD give. And our stop loss is below the lows, 5 minutes lows, or you can say 15 minutes lows as well. if if you can say that A plus set if you talk about, so our A plus setup comes when we have a good alignment with the Asian highs and Asian lows. If for example my bias is bearish, so if I say my bias is bearish, I must this must be happening, the highs of this should be taken out, and we should have a market structure that is forming bearish plus giving us a bearish Fair gap that I call a good A plus setup before starting the London pre-London session, kill zone basically. So let's see if we can get the entry.
We had a huge impulsive move here. Let's see if we can enter on this Liga if it comes down.
anyone trade crypto? I don't trade crypto personally. I used to trade crypto actually. वाह, आज तो 12:30 को ही शुरू हो गया। अरे एक्चुअली मैंने अपने डिस्कॉर्ड पर डाला था कि अगर आप लोग मुझे 5 रिएक्शंस दोगे तो आई विल बी कमिंग ऑन टाइम। तो इसीलिए मैं 12:30 आई। मुझे लगा आना चाहिए टाइम पे तो। बट आई एम सरप्राइज दैट यू आर ऑल्सो ऑन टाइम। आई विल फील वेरी वेरी बैड अगर ये एंट्री पे नहीं आया और ये ऊपर चला गया एंड दैट विल बी नॉट अ गुड थिंग। नहीं यार, फ्लिपिंग 5 minutes is flipping. We had a very very small fair valley gap right over here. बहुत छोटा सा fair valley gap था इधर। यहाँ से ये सब वो ले रहा है support, but let's see. Still I want a better entry right over here somewhere. Can you tell your execution setup, like how you execute or enter in the trade? Yeah, exactly. So first of all, I see my daily bias. What is my daily bias? For the my daily bias, I used to see the hourly bias. What is the hourly bias? But I also consider the daily thing. So अगर आप देखो on the daily time frame, अभी for now as of कि हमारी daily candle already flip हो गई थी without taking the low of previous daily candle. So we know that there is some kind of liquidity that is heading above. तो दैट हैपेंड एंड आफ्टर दैट कि हमारी जो डेली की वो ये वाली कैंडल है दैट इज फॉर्म्ड ऑन 8th Jan। तो 8th Jan की कैंडल ने ऑलरेडी हाई ले लिया अभी, इसलिए वी आर वाचिंग सम काइंड ऑफ रिजेक्शन राइट ओवर हियर। और यहाँ पे एक छोटा सा वो भी है फिर वाली का भी है बेरिश। एंड मेनली जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है दैट आई जस्ट लुक एट द 1 hour टाइम फ्रेम। तो 1 hour टाइम फ्रेम पे वी स्टार्ट विद द किल जोन। आई ट्रेड इन द किल जोन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑन द वन दिस वन 1 a.m. candle that is 11:30 in India, right? तो इसका हाई मार्क करा, इसका लो मार्क करा एंड आई सी वेयर वी आर हैविंग द ब्रेकआउट। तो जहाँ पे भी ब्रेकआउट होता है इन दैट डायरेक्शन वी आई कंसिडर पर्सनली माई बाइस टू बी, क्योंकि आई कंसिडर कि यूरो एसी इज अ पेयर दैट गिव्स अस द कंटिन्यूएशन मूव, राइट? एंड ऑल्सो आई सी कि हमारा जो एशियन हाइज और लोज की लिक्विडिटी कहाँ पर है ना? तो वो चीज़ मैटर करती है। अगेन मेरा जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ए प्लस सेटअप होता है, दैट इज इफ माई बेयरिश इज डाउन ऑन द 1 hour टाइम फ्रेम एंड हमने लिक्विडिटी हाइज की ले ली है एंड वी आर हैविंग अ गुड मार्केट स्ट्रक्चर ऑन 5 minutes, तो हम 5 minutes के फेयर वैल्यू गैप पे एंटर होंगे फिर उसके बाद। सो दैट इज माई होल कंसेप्ट। तो एज ऑफ नाउ इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे डाइसी लगा ट्रेड, बट स्टिल आई हैव प्लेस्ड माई बाय लिमिट। तो मेरा यहीं पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे 5 मिनट के मैंने प्लेस किया था अपना बाय लिमिट, राइट? सो दैट इज द होल सेटअप दैट आई टेक। लेट मी सी ऑन 15 minutes। अगर 15 minutes का ना यहाँ पे टैप हो जाता है here somewhere, maybe here, then also we can consider। Let's see। एंड मेरा जो टीपी रहता है दैट इज ऑलवेज 20 pips। वाई? बिकॉज हमारी जो एवरेज मूवमेंट है यूरो यूएसडी की दैट इज 20 to 25 to 30, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता यूरो यूएसडी। एंड इट ऑल्सो मेक्स द हाइज एंड लोस इन द किल जोन, सो दैट्स व्हाई आई टेक लाइक दैट। Yeah, I've seen that. What I thought was it was for Monday stream करना है कि नहीं, you literally posted the text in Discord and followed time, which is shocking. Yeah,
I was like, okay, you guys are not showing up, so I'm gonna post a reaction कि अगर 5 लोग कर देते हैं, but वरदान ने 5 रिएक्शन ऑलरेडी दे दिए थे, तो I was like, okay, I have to do the stream now. Euro is looking dicey to enter upside. Let's wait for more clarity. हाँ अभी यूरो ऐसे थोड़ा डाइसी है बट अगेन मैंने यहाँ पे बाय लिमिट प्लेस कर दी तो लेट्स सी इफ वी कैन गेट द ट्रेड और नॉट. डाइसी इसलिए है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एशिया के हाईज ऑलरेडी ले लिए. सेकेंडली डाइसी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इम्बैलेंस ऊपर है अभी. थर्ड आईसी इसलिए है क्योंकि हमने ऑलरेडी अब देखिए 8th जैन का हाई भी हमने ग्रैब कर लिया है तो थोड़ी ये कंडीशंस अभी बनी है बट अगेन वी नेवर नो ना. अकॉर्डिंग टू सेटअप आई एम टेकिंग इट दिस राइट ओवर हियर. अगर आया एसएल तो कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन एक्सेप्ट द एसएल. यहाँ पे थोड़ा सा इधर को स्टॉप लॉस लगाएंगे. Okay, I got you, but I also look for the premium and discount zone. Like right now, market is in premium zone, so I'm waiting for it to come in the discount zone to take buys. Okay, I understand your point, but I feel in the kill zone में जब हम entry लेते हैं ना तो it is very impulsive. So it immediately gives the movement and waiting in USD to enter in the correct zone. I feel like फिर वो बहुत movement चली जाती है जो हमें grab already करनी है. So that's why I prefer taking like that. So if we're in the continuation, I just flow with it. And sorry guys that I could not open my camera because again there's some kind of glitch in OBS. I mean that's also a good strategy अगर आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट देख रहे हो दैट आल्सो वर्क्स अगर आपके लिए काम करता है. बट मैंने बहुत अपना सिंपल रखा है. I just want to see the market structure, my buys and the liquidity zone. That's all for me. अच्छा ग्लिच है या आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन ओबीएस अभी. अगर किसी को लाइक ओबीएस चलाना आता है यू कैन लेट मी नो.
I have seen a guy in your Discord named Pawan. Do you know him? Is he trade NQ? Yeah, he trades NQ. Nasdaq. USD JPY 4-hour flip and supply zone 2. USD JPY 4-hour flip. USD JPY. 4-hour flip to the downside. Hmm. Yeah, the market structure is shifting to the downside. Okay, thanks for telling. No problem. Anytime you can ask anything. Is he a good trader? How would I know? Ask him. How does he trade NQ? Let's see now what happens. This is the position and it's already been activated. TP or SL, you're gonna take it, right? If you're a beginner, I would say just cut your position to 1:1, 70% you book your profits and let the rest to run to TP. But personally, I take the full TP, 20 pips पूरे. And why? Because I feel कि यूरोएसटी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है and बहुत बारी ब्रेक इवन पे आकर फिर ऊपर चल जाता है. So I never do that mistake. So I either hold or either it's TP or SL. That's all. Hi Sanya, hello, how are you? Fit with Pawan Yadav. How's your Nasdaq going, Pawan? I think a friend is asking.
Let's see how this week will go. It's good. Last week made a handsome amount of profit. That's good, yaar. I hope for you guys that you guys make good profit. And even Yuvansh passed his first funded account. Nitin, did you remember that we gave him lecture for 1 or 2 hours? But finally, he passed the account. I'm happy for him as well. What do you focus more on, win rate or a risk to reward? I focus on both of them actually. It's a balance of a win rate plus RR. See, at first I used to focus more on my win rate. Why? Because to make my psychology good, if you have joined my streams, earlier streams, I used to take the 1:1 trade. So people used to criticize me why you're taking 1:1 trade, but they don't know that it's actually good to take 1:1 trade to make your psychology better. सो आपकी साइकोलॉजी बहुत बेटर होती है अगर आप 1:1 ट्रेड लेते हो क्योंकि देयर इज अ विनर्स इफेक्ट. अगर आप 10 में से 7 बार ही जीत रहे हो एक ट्रेड में तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. एंड अगर आप 3 लॉस ले भी लोगे तो एज अ बिगिनर आप उसे एक्सेप्ट करना सीख जाओगे लॉसेस को. सो आई फील विन रेट पे आप अगर शुरू में फोकस करोगे तो इट्स वेरी गुड. उसके बाद धीरे धीरे यू कैन कम अप विद द गुड आर आर एज वेल. So after taking good win rate, I journaled my trades and observed. After that, I started taking like a good RR, 1:2 or more than that. So make a balance of it, and firstly you can focus on a good uh, like win rate, then you can focus on RR. So try to make a balance of it. Even I have a video made on that RR and win rate. You can watch that. How many pips we are? Okay, 15. Let's see. 11 pips right over here somewhere. So हमारा 1:1 almost आने वाला है here. So if you guys want, you can just take your 70% of profits right over here and make your trade to 1:1 and maybe SL to BE if you guys want. Then only if you want to play it safe. But I'm gonna hold this trade till T. So we are already done with 1:1. So I'm gonna write over here. See, that's the thing I say always कि आप यूरो यूएसडी में किल जोन में ऐसे ही होता है. किल जोन में फटाक से मूव आता है. लाइक यू हैव टू सी कि आपका डायरेक्शन कहाँ है. दैट मैटर्स इन यूरो यूएसडी. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि just keep your entry precise in the kill zone especially. So I never wait for the retracement or any kind of areas when I trade euro USD especially. So what if we trade in two accounts in which I take 1:1 trade and
Second account we hold to 1:2, so at least we could take some amount of the money on. Exactly, that's what I did. That's a very good approach actually. I used to trade in one account 1:1, and in the second account I used to trade 1:2. So I must say that's a very good approach. You can as well do that. So also you will be able to analyze USD better that way. If you are running two accounts in the same trade, you can observe the things very well in that. And if you're trading Euro USD, I mean, I'm just saying 1:1 you take. Why? Because you will be able to know the nature of Euro USD. If you are actually doing very well with the Euro USD already, so then you can easily take 1:2 trade. That's not a problem. Why are numbers not visible for Euro USD in your on your screen? Like, and oh, okay. Wait, I'm gonna adjust that. That's because my OBS is not adjusted. I'm sorry. I think now you can see the numbers. UJ, my trade SL is at BE and running 1:4 currently, not going to close partials in this as it already gave a massive pullback, and now it has to go down to fill the imbalance in 1 day and 4 hour time frame. Okay, nice. That's 15 minutes engulfing candle or manipulative manipulation candle. 15 minutes. It's loading, wait. See, until what I say, always I say, until we are in the trend, हमारा जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक हमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है. जब हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ देन वी नीड टू वरी अबाउट कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या यहाँ से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बदल रहा है. देन ओनली वी हैव टू वरी. अंटिल हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है तो यू डोंट केयर अबाउट द कैंडल्स व्हाट्स हैपनिंग, क्या कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, डजेंट मैटर. मेरे केस में यही है, देखो बढ़िया से हमारा ट्रेंड चल रहा है, वी आर हैविंग अ गुड ट्रेंड अंटिल बार हमारा ट्रेंड ब्रेक नहीं होता है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. अगर इसने यहाँ पे इससे ब्रेक करके क्लोजिंग दी यहाँ कहीं, अगेन आई डोंट बिलीव दैट ऑल्सो, क्योंकि यूएसडी में इतनी कंसोलिडेशन होती है, सो वी नेवर नो. So just believe in what the trend is saying. We are having the higher highs, higher lows, higher higher and higher lows. The trend is in the continuation direction. So that's all. And also one more thing कि हमारा fair value gap intact है. More than that, हमारा ये वाला fair value gap है, that is already intact. अगर ये भी fill हो जाता है ना, then we have to see कि हमारा market structure बदल रहा है, क्योंकि वो IVG बन जाएगा. Manipulation candles indicates trend flowing. Yeah, I know, but see, यही चीजें मैं सबको बोलती हूँ कि अपनी जर्नी कॉम्प्लिकेट क्यों करना है यार, मतलब see, I try to make things very simple. I try to make very कि सबको समझ में आए. अब किसी को नहीं पता मैनिपुलेशन कैंडल क्या है या फिर प्रीमियम जोन क्या है, तो नहीं पता होता लोगों को, बट आई वांट कि सबको सिंप्लीफाइड मेथड से पता लगे, ऑब्जेक्टिविटी से पता लगे. ये जो हम मूव कैप्चर करते हैं ना, ये ऑलरेडी मैनिपुलेटिव मूव होता है हमारा. ये जो हम मैनिपुलेटिव मूव ही कैप्चर करते हैं ऑलवेज इन द यूरो एएसटी, दिस काइंड ऑफ टाइम किल जोन्स में.
How many pips we want? Almost 10 pips we need to get the TP. देखते हैं, let's see what happens. And actually, if you guys wanna test the Euro USD at this time, like the that person said, I think I don't know what was his name, Anadi, I guess. So he said that take the two counts and trade 1:1 in one and trade 1:1 two in another. So that's a very good approach actually to test this out at the same time. So you will save a lot of time on this if you are working with the Euro USD, you know. अभी भी हमारा पूरा ट्रेंड में चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, तो तब तक तो टीपी आ ही जाएगा until we don't break any kind of structure. Just this area जो है ना हमारा, हाँ, we are about this kind of, okay. So we're gonna fill the half wick of the, this is 7th Jan's daily candle if we get the TP. Just one more thing. Does Killzone thing change in summer or still it will be at 11:30 a.m.? The kill zone is always at this time, 12:30, like 2 p.m. to 2 a.m. to 5 a.m. in -4 UTC. So अगर आप ये करोगे ना, यहाँ पे देखो, I'll show you out. This 2 a.m. to 5 a.m. ये फिक्स रहेगा हमारा. जस्ट इन केस हम अपना यहाँ पे सिर्फ टाइम -5 चेंज कर देते हैं, -4 चेंज कर देते हैं समर्स में, और -5 चेंज कर देते हैं विंटर्स में. सो हमारा टाइम जोन यहाँ पे सेम रहता है ऑलमोस्ट. बट अगेन अगर आप टेस्ट करोगे सेम चीज एट 11:30, हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम करते थे 11:30 समर्स में, तो समर्स में 11:30 ट्रेड लोगे तब भी सेम रिजल्ट ही आपको मिलेंगे. It doesn't really affect कि आप 11:30 कर रहे हो 12:30 कर रहे हो, but winters में just prefer 12:30. But again in that winters में वो automatic change हो जाता है UTC -5 ट्रेडिंग में. हाँ, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है उसमें. बट अगर आपको टू बी प्रिसाइज आपको कोई इंडिकेटर लगाना है ना कि कंफ्यूज ना हो,
तो जस्ट ये रखना अपना, सारा सीन यही रखना। बस समर्स में अपना यहाँ पे -5 कर देना, और विंटर्स में अपना विंटर्स में -5 कर देना, और समर्स में -4 कर देना, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ये वाली सेटिंग्स रखना अपनी पूरी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बीच में अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन्स। Few pips are left to go. Let's see. 7 8 pips. एंड द गुड थिंग अबाउट इज दिस कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारी एंट्री थी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे हमारा टीपी था, ऑल सेट। बस सेट करना है आपको, पोजीशन सेट करनी है, एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन। See how much is left. Almost few pips more to go. 7 pips. So after the kill zone candle break, you look for the fair value gap in the direction as confluence. Exactly. After the kill zone candle break, I see the fair value gap on the 5 minutes with the time with the market structure. For example, in this case, I took the here my trade on this fair value gap and placed my stop loss to the here below the swing low, and TP fixed 20 pips. USD JPY is looking good for the long 157.804. Support sustains. 15 minutes flipping, 1 hour is flipping. Let's see. 157.804. 1 point, wait, let me see USD JPY.
1.157.804, 157.804. Let me see. Yeah, 1 hour is flipping. I think so. One is about to flip right over here. So if the 1 hour manages to close within this range or above this range, then also we are good for the bullish. We have a relative equal highs right over here. So this can be our liquidity target. Hi Sanya, कैसे हो? I'm good. How are you? Let's see, let's see. The only problem mine is executing the trade, the confluences. At what time do you execute the trade and like in which pair do you execute the trade? I think you know what that's what I say every single time कि जो confluences होते हैं ना that is purely subjective in nature. अगर कॉन्फ्लुएंसेस सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिविटी पे इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव चीजों पे ज्यादा फोकस करो विच इज एबल टू बी सीन बाय एवरीबडी कि अगर मुझे कोई चीज दिख रही है तो वो सबको दिख रही है ना तो कॉन्फ्लुएंसेस कभी कभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक टाइम विंडो अपनी बनाओ एक सिस्टम बनाओ अपना कि यहाँ पे एंट्री तो यहीं पर ही होगी कुछ भी हो जाए आज है कल है परसों है मेरी एंट्री यहीं पे ही होगी तो मेक दैट ऑब्जेक्टिव और डिस्पाइट कि आपका बाइस कुछ और किसी और का कुछ और है या फिर कोई भी इंडिकेटर है कुछ भी है उसको आप इग्नोर कर दो निग्लेक्ट करो अगर आपको पता है मेरी एंट्री यहाँ है मेरा बाइस यहाँ है तो मैं यहीं पर ही मेरी एंट्री होगी विदाउट एनीथिंग कि अगर अभी देखो अभी यूनिवर्सिटी काफी डाइसी था इट वाज इन डाइसी नेचर बट आई सेड दैट आई एम गोना टेक माय एंट्री आई एम गोना प्लेस माय बाय लिमिट राइट ओवर हियर
विदाउट एनी कॉन्फ्लुएंसेस, है ना? मैंने बताया कॉन्फ्लुएंसेस कि मेरी फेवर में नहीं है, कुछ चीजें नहीं है मेरे फेवर में। आई जस्ट सेड राइट नाउ कि नीचे इम्बैलेंस है, एंड डेली में भी लिक्विडिटी नीचे है, और बहुत कुछ चीजें हैं, मैंने अभी बताया है ना, कि मेरी कॉन्फ्लुएंस में ये नेगेटिव में जा सकता है। बट आई इग्नोर्ड दोज थिंग्स एंड आई टुक द ट्रेड, right? So that is more of, you need more of confidence in your setup, and work on objectivity rather than, depending on the confluences या उसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वो चीज़ है। So try on that part. Hi Sanya, कैसे हो? I'm good यार, I'm good. How are you? Entered in USD JPY on a support of 157.810, buy with a sell or 157.452. SL, let's see, targeting 1:1 now. Perfect. You can share in the Discord maybe your setup. You sounding stressed? Nahi yaar, I'm all good. The only problem is that I cannot switch on my camera because it's I don't know what's up. So then you could have seen my laughing face. I'm focusing mainly on Euro and also DXY, and I look 1 hour 15 and 5 minutes को analyze and trade on 5 and 1 minute time frame. यार, don't be confused in DXY. अगर तुम DXY को साथ करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो DXY तो भूल जाओ उसे, मतलब मत करो, उससे ज्यादा कंफ्यूज हो गए अगर आप यूएसए भी कर रहे हो ना। तो just focus on just Euro USD itself and don't look to DXY and stuff. 1 hour is good यार, 1 hour पे अगर आप देख रहे हो तो no issues, and 5 minutes to analyze and trade and 5 and 1 minute time frame, तो ठीक है यार। तो फिर अगर आपको जस्ट कंफ्यूजन, जो आपको जहाँ पे चीजें कंफ्यूज कर रही है ना, उससे एलिमिनेट कर दो, आई वुड से। जो भी चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं उस चीज से DXY, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ पॉइंट टू लुक एट DXY इफ यू ट्रेडिंग यूरो यूएसडी। तो उससे आप वो चीज आपको और ही मुश्किल में डालेगी। अरे कोई बात नहीं, कैमरा आपकी सुंदरता देख नहीं पाया इसलिए आईज बंद कर लिया है। I think now it's time for the consolidation of euro USD. I'll end the stream in few minutes. So let's see. Nowadays markets are reacting too much on news. It's becoming tricky to trade. Yeah, I mean, I think because of geopolitical situations,
That's why. I mean, I have never seen. I mean, lately I've never seen this kind of move. In Euro, I don't think so. I've seen like that. The last news that we had in Euro, especially. But yeah, it's kind of tricky these days. I think that is a good sign that we should avoid trading news. एशियन सेशन अच्छा मूव जा रहा है, बस बाकी पूरा दिन रो रो के चल रहा है, क्या ही प्लान करें ऐसे. दैट्स वेरी ट्रू यार. गोल्ड चेक करो, आप पागल हो जाओगे. आई डोंट चेक गोल्ड बिकॉज मुझे पागल नहीं होना है. यार गोल्ड, दैट्स व्हाई आई डोंट लुक एट द गोल्ड. गोल्ड आई थिंक इट वाज इन, इट मेड या ओके. ठीक है, इसने, हाँ मैं आज सुबह चेक कर रही थी तो इसने हायर वो बना दिया ना, ऑल टाइम हाई. क्रेजी मैन. You guys had good opportunity of buying in gold. डेली भी अपसाइड ओपन हुआ है. क्रेजी. यार नास्डैक तो डंप हो रहा है अभी. यूएस 100 इज डंपिंग काइंड ऑफ. मौका दे तब तो बाय करें. एक्चुअली वेरी ट्रू कि उसका मोमेंटम इतना ज्यादा है कि आई डोंट थिंक सो यू गाइस वुड बी हैविंग अपॉर्चुनिटी. अगर रिट्रेसमेंट आती देन यू कुड थिंक ऑफ. What if we wait 12:30 candle to close and then see where the market is and then look for the confluence as pre-market take the liquidity first and then give us the momentum. यार बेसिकली अगर आप बैक टेस्ट करो, इफ यू सी बैक टेस्ट द 12:30 डेटा, तो 12:30 का डेटा ही मैनिपुलेटिव, हम कैप्चर ही लिक्विडिटी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना. तो अगर आप करो ना, दैट इज कॉल्ड, जो हमें स्विंग कैप्चर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड जूडा स्विंग. सो आई डोंट नो इफ यू, मुझे भी रिसेंटली पता लगा जो हम ट्रेड करते हैं दैट इज कॉल्ड जूडा स्विंग. मैं कल देख रही थी, परसों पता नहीं कुछ टाइम पहले, कि हम जो ट्रेड करते हैं उसे ये बोलते हैं, बट आई वाज जस्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट. तो ये फोकस इस पे होता है मेनली कि हमारी बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ की ग्रैब हुई है और उसके बाद हम मूव कैप्चर करें. तो प्री लंदन सेशन तभी हम ट्रेड करते हैं. अब किल जोन देखो, किल जोन बना क्यों है? किल जोन बना ही इसलिए है कि हम उस पे हाइज और लोज कैप्चर कर पाए, है ना. हाइज और लोज कैप्चर कर पाए इस सेशन में, और हाइज एंड लोज किल जोन में बनते हैं. और यूरो यूएसडी मैक्सिमम देता है 20 पिप की मूवमेंट. अब 20 पिप्स आपको नहीं मिलेंगे ज्यादा. अगर आपको रिट्रेसमेंट में मिलती है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपका यूरो यूएसडी कंसोलिडेट होने लग जाएगा. तो आप कहाँ क्या मूव कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि यूरोएसडी अपने में ही इतना ज्यादा स्लो है कि आप कोई मूव ही नहीं कैप्चर कर पाओगे एक्सेप्ट द 20 पिप्स. सो दैट्स द थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट, कि उसकी मूवमेंट को पकड़ो, कि उसकी मूवमेंट कितने टाइम पे आती है, कब आ रही है. आप खुद बैक टेस्ट करके देखो एक बारी कि उसकी मूवमेंट कब आ रही है, कितने पिप्स की आ रही है, एवरेज मूवमेंट कितनी है. तो तब आपको पता लगेगा कि यार इसकी एवरेज मूवमेंट ही इतनी है, इसने इससे ऊपर देना ही नहीं है. तो देर इज नो पॉइंट ऑफ एंटरिंग बाद में.
अगर ले भी लोगे तो फिर आपको मूव नहीं आएगा, फिर वो पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करती रहेगी। जब सोए रहते हैं तो candle to close and then see where the market is and then look for the confluences as pre-market take the liquidity first and then give us the momentum. यार यूरो यूएसडी में बहुत ही उल्टा केस है, इट यूजुअली गिव्स द वन साइडेड मूवमेंट। अगर आप देखो ना, यूरो यूएसडी में वन साइडेड मूवमेंट बहुत आती हैं, बहुत कॉमन है, वरना हम अभी तक ट्रेड ही ना कर रहे होते यूरो यूएसडी। जब सोए रहते हैं तो भाग जाता है, एक्टिव होते ही चलते ही नहीं, बहुत दिक्कत है जिंदगी में। गोल्ड भी लाइक रिट्रेसमेंट, वो क्या होता है गोल्ड ने, नाना बस फ्लिप करता है, वो रिट्रेसमेंट डायरेक्ट को एंट्री कर सकता है टू थिंक थी, नहीं तो मैं चला ऊपर। अच्छा सॉरी यार, आई कांट रीड प्रॉपर्ली दैट। हाँ यार, गोल्ड ऐसे थोड़ा वाइल्ड है, दैट्स व्हाई मेरे को इसीलिए पसंद है यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप आराम से एटलीस्ट 1 घंटा आधा घंटा बैठ के एंट्री आप अपनी आराम से ले सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। क्योंकि गोल्ड अपने में ही इतना ओवर हाइप्ड है कि एवरीबडी वांट्स टू ट्रेड गोल्ड नाउ, दे डोंट नो कि यार गोल्ड यू कैन ट्रेड बट यू नीड टू बी बहुत ज्यादा मास्टर टू बी दैट, एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल इवन, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो you need to make the money at the end, है ना? तो why you have to make the complicated stuff and learn sophisticated terms also? सिंपल चलो, अपना जो आपको लग रहा है आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहा है, इफ यू थिंक दैट यूर यूएसटी इज स्लो एंड आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहा है, यू कैन इजीली टेक। क्योंकि गोल्ड आपको पेशेंस नहीं सिखा सकता, पेशेंस आपको सिखाएगा यूरो यूएसटी, क्योंकि आपको एक ही ट्रेड में पूरा दिन बैठना पड़ता है। तो पेशेंस आपको उसी चीज से आएगा, जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज करो। अरे कोई बात नहीं, कैमरा आपकी, यार आई नीड टू फिक्स माई कैमरा, पता नहीं व्हाट्स हैपनिंग विद कैमरा, समटाइम्स इट वर्क समटाइम इट डजंट, आई डोंट नो। कि मैंने ओबीएस पे अपडेट किया था बट गोल्ड को जंगल में छोड़ देंगे टाइगर के सामने, बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रहा है। हाँ यार, गोल्ड एंड सिल्वर तो यार ऊपर ही जाने वाले हैं, अब तो वैसे भी ग्लोबल टेंशन इतनी ज्यादा वो हो गई है। तो silver will give more returns, I feel, than gold this time. Let's see, it's back up. अगर हमारा टीपी आ जाता then I will be ending the stream, देखते हैं। But I feel, I don't know, I have a like instinct कि ये बहुत consolidate करेगा अभी। Let's see if we manage to get and break this above area. आप पीसी से ओबीएस यूज करते हो या लैपटॉप? आई यूज फ्रॉम द लैपटॉप। आई हैव 8 votes फॉर बाय इन यूरोएसडी, मतलब सबका बाइस बाय है आज। हाँ, सिल्वर हमको नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में 93% रिटर्न दिया till now। एग्जैक्टली यार, इस साल गोल्ड से भी ज्यादा निकल गया सिल्वर। आई एनालाइज एंड परचेज सम बॉन्ड्स। नाइस यार।
इसलिए आपका ओबीएस लग कहाँ रहा है, बिकॉज ग्राफिक लग कर रही है लाइव आउटपुट में। नहीं यार, यूजुअली मेरा ओबीएस बढ़िया चलता है, बट आई डोंट नो इस मंथ बहुत दिक्कत हो रही है। लाइक पिछले जितनी भी स्ट्रीम्स मैंने करी हैं तो बढ़िया चल रहा था मेरा ओबीएस लैपटॉप से, बट नाउ आई डोंट नो। कैश मेमोरी क्लियर करके एक बार देखिए। हाँ यार, आई विल ट्राई, मे बी आई विल री इंस्टॉल दिस ऐप, और मे बी आई सी द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस ऐप, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया था तो देन इट वर्कड अगेन, but again then this happened. If not, then reinstall OBS. Yeah, might be, but it's a very problematic. Let's see, I think अभी तो consolidate ही हो रहा है यूनिवर्सिटी। Why does trading exposes personal weakness so fast? Because जो आप ट्रेड कर रहे हो, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, दैट यू आर टेकिंग, जो भी आपका इमोशनल बिहेवियर है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है ऑन द चार्ट्स। सो अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, तो वो सारी चीज़ें आपका मार्केट एक्सपोज करेगा, बिकॉज देन इट टेस्ट यू, इट्स लाइक अ मिरर दैट विल रिफ्लेक्ट यू। अगर वहाँ पे आपने डिसिप्लिन नहीं शो किया, तो दैट इज लाइक कि आपका टेस्ट है, वो एक डिसिप्लिन टेस्ट है। अगर आपने वहाँ पे डिसिप्लिन शो नहीं किया, देन इट विल एक्सपोज एवरी वीकनेस अबाउट यू। सो इट्स वेरी सिंपल दैट। वाई? बिकॉज वहां पे आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हो, एंड ट्रेडिंग विल एक्ट एज अ मिरर, रिफ्लेक्ट करेगा आपको हर एक चीज पे। आप देखना, अपना लाइफस्टाइल सॉर्ट करोगे, अपनी छोटी छोटी चीजें सॉर्ट करोगे ना, आपकी ट्रेडिंग वैसी ठीक हो जाएगी। So, पूरा दिन चार्ज पे भी नहीं रहना है, 1 घंटा आप चार्ज को दो, एंड देयर इज अ लाइफ आउटसाइड ऑफ दैट। हाँ, तो वो जंक फाइल स्टोर हो रहा है आपको, इसलिए लग रहा है एंड दिक्कत दे रहा है। Yeah, might be, maybe today I'll be cleaning my laptop, so maybe I can see. Or then if not, then I'll change the application maybe.
Alright, guys, then it's already been 2, yeah, 2:10. So I'm gonna update you with this trade on my Discord or maybe on Instagram. So if you guys have any question, you can ask me in Discord and I will be there to answer. So that's all because it will take time and I'm not sure that we get the TP in few minutes. Might take time. So, bus. And if you also have taken this trade, do let me know and then we can discuss maybe tomorrow, same time. सिर्फ पानी से धो दीजिए सब मस्त चलेगा हाँ then I will not be able to stream also. Good advice. I think we are getting the impulsive move. Let's see. So I'm gonna leave you with this candle. इसको white कर देते हैं. Maybe green कर देते हैं यार because again वो नहीं है मेरे पास. बस. We are manifesting this candle. Alright, guys, and this is it for the stream today. Let's see you tomorrow at the same time. कोई questions होंगे तो आप पूछ लेना. So I'm gonna update you with the SL or TP. I'm gonna hold this trade. और बाकी अगर किसी ने 1:1 कर दिया है 70% तो that's good क्योंकि already they have got the target. ठीक है guys and bye bye, take care, see you all tomorrow.